Welcome students. We, the loving mentors of Mentor International School, have come together to have a role play to demonstrate the working of Indian electoral process. What is election and what are elections and who all can vote? All these questions will be answered through this play. In India, we conduct election, wherein process people they come together through the process of voting, elect their representatives and leader. In India, we conduct elections for various posts. For post of Lok Sabha, for state legislative assemblies, for state legislative councils, and various posts of the panchayat. What is re-elections? A chosen candidate, and when his post becomes vacant, there either because he resigns or due to his untimely death, re-elections are held. Today, the premise of the play is the death of an aspiring candidate, Mr. Narayan Burla. His untimely death has caused political upheaval in Maharashtra, and Election Commission has declared a re-election. So now, get ready to experience the working of electoral process of the greatest democracy in the world. Thank you. Hey, hi Sabha. What's going on? Hey, hello, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। आज आप चाय पीने की। हाँ, चलो चाय पी के क्या चल रहा है पता है? क्यों क्या हो गया? You didn't see that news? नहीं तो क्यों क्या हो गया? Mr. Narayan passed away ना? Oh my God, it's such a shocking news. हाँ, just switch off the television. Good evening viewers, I Deekshika Singh and Ashreya Ingrid welcome you all on your own BTC news channel. There is an earthquake in the field of politics in Maharashtra. The famous political leader Shri Narayan Burla has passed away due to heart. और ये खबर के मुताबिक हम देखते हैं तो पूरा पॉलिटिक्स हिल गया है ड्यू टू हिज अल्टीमेट डेथ सो द इलेक्शन कमीशन हैज डिक्लेयर्ड re-election for this post. The candidates are supposed to file their nominations within 30 days. Namaskar, I Aisha Sayyed reporting from the studio of MIS News Channel. Dear viewers, as you can see on screen, the candidates are filling their forms as our reporters are reporting directly from the district office. As you can see, the preparations are on full swing for the re-elections. As it is the first step, let's hope for the best. Thank you. Hello, Namaste, Sastriyakal, Assalamu Alaikum, Namaskar. Welcome everyone to our channel TV9. Welcome our panelists. I would like to welcome everyone for the panel discussion on the topic re-election. Before the panel discussion starts, I request everyone to keep their mobile phones on mute. As the panel discussion is there, let's start it with one kind of शायरी. So सभी एक जैसा ही लिखते हैं, सभी एक जैसा ही लिखते हैं, बस मतलब बदल जाते हैं. सभी एक जैसा ही लिखते हैं, बस मतलब बदल जाते हैं. सरकारें वैसी ही चलती है, बस वजीर आजम बदल जाते हैं. So this kind of शायरी is actually suitable for this period, as we know that there was a sad demise of Mr. Narayan Burla. So let us start with the panel discussion with the members present over here. So let me first introduce our panel members who are there for the discussion. Mr. Atish Kulkarni,
a leader from Aam Janata Party, Mrs. Chaya Tavde, face of Deshwadi Party, Mrs. Asmita Amole, face for the Socialist Party, and Tejaswini Burla, a young dynamic leader, daughter-in-law of late Mr. Narayan Burla, face of Lok Hitwadi Party. So, before the discussion starts, I would just like to tell you that you have to keep your mobile phones on mute. Thank you. So, let us know about the members present over here. So, we will begin with Mr. Atish Kulkarni. आप अपने पक्ष के बारे में और आपके बारे में कुछ हमें बताना चाहोगे? बिल्कुल मैम, हमारी पार्टी का एजेंडा बिल्कुल साफ है। हम ये चाहते हैं कि देश में जो आम जनता है, आम पार्टी है, उनका विकास होना चाहिए। हम जब से देख रहे हैं यही होता आ रहा है कि एक तरफ उन्नति की बातें होती है, विकास की बातें होती है, लेकिन हमने कभी ये सोचा है कि ये कितने लोगों तक पहुंच रहा है? मैक्सिमम 10 से 20% जो अपर क्लास में है उन तक ही ये बातें पहुंच रही है। बाकी 80% जो जनता गांव में रही है उनके पास ये चीजें पहुंच ही नहीं रही है। अनेक योजनाएं अनेक आई, लेकिन अभी तक गरीबी हटी नहीं। जब से इंडिपेंडेंस आया है तब से देख रहे हैं ये बातें, हर पार्टी आती है, बातें करती है, लेकिन कोई काम नहीं होता है। तो हमारी पार्टी का यही एजेंडा है कि आम आदमी के लिए जो अच्छा है वही हम करेंगे, उसके हित में सोचेंगे और उसके बारे में ही काम करेंगे। साक्षरता की जान, साक्षरता की जान, येऊन येणार कोण? आम्हाला जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा। जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा। साक्षरता की जान, थैंक यू आतिश सर, आपके जो विचार थे बहुत अच्छे थे। अभी इस विचारों पे जो छाया मैम है, छाया तावड़े जी, जो एजुकेशन फील्ड से यहाँ पे है, वो हमें अपने विचार बताएंगी और वो अपने पार्टी का चेहरा क्यों है, का तुम्ही तुमच्या पार्टीचा एक चेहरा, मुख्य चेहरा ठरलायत आणि तुम्ही उमेदवारीसाठी आपला अर्ज दिलाय आणि तुम्ही सिलेक्टही झालेला आहात, तर का आणि का तुम्हालाच लोकांनी वोट करायला हवं हे तुम्ही आता आम्हाला सांगणार आहात। नमस्कार, मी छाया तावडे। देशवादी पार्टीने माझी निवड केल्याबद्दल मी प्रथमतः त्यांची खूप आभारी आहे आणि मला खरंच खूप आनंद होतोय की देशवादी पार्टीचे कॅन्डिडेट आहे आणि आतापर्यंत आपण आतिश कुलकर्णी सरांचं मत बघितलं की जी आम जनता आहे त्या आम जनतेची प्रगती कशी झाली पाहिजे किंवा आम जनतेला पुढे घेऊन सगळ्यांना कसं जाता येईल याबद्दल आतिश सर बोलले आणि माझाही तसाच काही म्हणजे समान आपण म्हणूयात की मुद्दा आहे शिक्षण। तर आम जनतेपर्यंत शिक्षण कसं पोहोचलं पाहिजे यासाठी आमची पार्टी म्हणजे कार्यरत राहील। त्यानंतर शिक्षणामुळे समाज कसा सुसंस्कृत होतो त्यासाठीही आम्ही कार्यरत राहू आणि आज आम्हाला इथे पॅनल डिस्कशनसाठी TV9 चॅनलने बोलवल्याबद्दल खरंच मी त्यांची खूप ऋणी आहे। थँक्यू। धन्यवाद छाया मॅम, तुम्ही जो शिक्षणाचा मुद्दा इथे पुढे मांडलाय त्या मुद्द्यावरनं तुम्हाला लोकांनी कितपत वोट करावं हे त्यांच्या हाती। पुस्तकावरच मारा शिक्का, येऊन येणार कोण? छाया ताईशिवाय हेच कोण? येऊन येणार कोण? छाया ताईशिवाय। तो जैसे हम देख रहे हैं अभी हम हड़पसर के यहाँ पे लाइव है और ये तीसरी पार्टी है जिन्होंने इनके नारे लगाना शुरू कर दिया है और बहुत ज़्यादा एनकरेजमेंट है यहाँ पे। तो आइए हम उनसे बात करके देखते हैं कि उनको क्या कहना है। तर तुम्हाला काय वाटतंय, तुमची पार्टी निवडून येणार आहे का काय, तुम्हाला काय वाटतंय आज? आम्हाला तरी नक्कीच वाटतंय आमचं ताई माई अक्का, ताई माई अक्का। त्यामुळे आम्हाला नक्की 100% वाटतं आमच्या ताईच निवडून येणार आहेत, त्यामुळे सगळ्यांनी आमच्या चिन्हाला वोट करायचं आहे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है इस बारे में कि वही जीत के आने वाले हैं। और मेरे साथ अभी है मेरे कैमरामैन फराज शेख और मैं रिपोर्टर तनिष्का फ्रॉम लाइव और लोकेशन।
and VTC team. Thank you. तर आपण पुढे बघूयात अस्मिता अमोलिक मॅमकडे. सो अस्मिता अमोलिक मॅम, आज यू आर द फेस ऑफ द सोशलिस्ट पार्टी, what are your views and how you are going to take this opportunity as if you are getting elected? So will you like to just give few words on it? Yes, sure. Actually, being the face of Socialist Party, I am very thankful to my people who have given me this opportunity to come here for them and to work for them, because the theme is "You darken, we enlighten," and the symbol is candle, where we all know that candle always enlightens people. And here I am fighting for economics. Why? Because nowadays there is lots of hikes in everything, and where common man cannot buy and afford. So, being the face of my channel, I would like that people, common man, don't remain jobless, don't remain homeless, don't remain sad. They only should be happy in everything that they do. So, I would like to thank TV9 channel for calling me here and for me for expressing my views. Thank you so much. Thank you so much, Asmita ma'am. मेणबत्ती लेके आएंगे, दीप जलाएंगे, मेणबत्ती लेके आएंगे। वेलकम बैक टू MIS चैनल। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं रिपोर्टर श्रेया इंगड़े कैमरामैन संजना के साथ लाइव रिपोर्ट कर रही हूँ। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे उम्मीदवार अस्मिता अमोलिक ग्राउंड पे उतरे हुए हैं और उनके साथ उनके कार्यकर्ता पूरे जोश में दिखाई दे रहे हैं। अभी हम उस कार्यकर्ता से कुछ प्रश्न पूछने वाले हैं। तो आपको क्या लग रहा है, आपकी पार्टी जीतेगी? हमारी पार्टी जीतेगी, हमारी पार्टी जीतेगी। तो आप देख सकते हो कि कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा जोश भरा हुआ है। लाइव रिपोर्टिंग फ्रॉम हडपसर, वी कैन सी दैट अस्मिता अमोलिक, our candidate, she is on the ground to encourage her party, and all the members of her party are having lot of enthusiasm in them. So we will be back to you with more news reporting from Hadapsar. Thank you. A point which you have put, like the poverty is the issue and the common man is the issue again over here by three of you, the candidates. So might be जनता will be in the some kind of संभ्रम में रहेगी कि किसको वोट करना चाहिए। तीनों भी कैंडिडेट्स कॉमन मैन के लिए ही खड़ी है। तो चलो हम चलते हैं अपने नया चेहरा, that is youth face, who is going to change something and might be having some dynamic thoughts with her. So let's welcome Tejaswini Burla ma'am for presenting her views. So Tejaswini Burla ma'am ji, what are you expecting and how you are going to present your party? Okay, so first of all, as we have known that my father-in-law, Mr. late Narayan Burla, has done a lot of development in the society. If you see, like he has built up the roads, he has set up the hospitals. Also, most of the times he has worked for the upliftment of the poor people. So, as a daughter-in-law, I would like to continue his legacy in the development of the common people, okay, and in working for the children, okay, and for the upliftment of the women. Also, I would like to work for the security of the women, as now we are saying the security of the women is the utmost important in these days. So, I would be keeping the youth in my mind. I would be working along with them. I would be taking their thoughts and views, and as a team, we are going to consider the youth, because most of the population of India is the youth. So I'll be working with them and I'll be trying to bring the changes in the society. Also, my agenda would be like I would be giving more preference towards education. As we are in the pandemic situation, we have seen many of them have lost their jobs. One of the reason could be of education as well, because if there would have been an education, everyone would have survived. So the foremost importance I would be giving is for the education mindset of the parties. Okay, we are working for the upliftment of the common people. हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? तो जैसे आप देख रहे हैं, हम यहाँ पे
हम यहाँ पे लाइव है हड़पसर में और हमारी वीटीसी की टीम यहाँ आ चुकी है। मैं रिपोर्टर तनिष्का, मेरे साथ कैमरामैन संजना तकले। और हम यहाँ देख रहे हैं कि लोकहितवादी की पार्टी यहाँ पे नारे लगा रही है, तो आइए उनसे हम थोड़ी सवालात करते हैं। तो हाउस द जोश, और आपको क्या लगता है आपकी पार्टी जीतेगी? हाँ जीतेगी ना, बिल्कुल जीतेगी। So I think whom should a common man vote? आतिश सर किसे वोट करना चाहिए ताकि ये पार्टी आगे जाके सब साथ एकजुटी से काम कर सके? ये हमें बताने की जरूरत नहीं है मैम, जनता सब जानती है। जनता बहुत जरूरी है और समझदार है, वो कोई एक चैनल देख के डिसाइड करने वाली नहीं है। बहुत सालों से वो काम चैनल देख के तो जनता डिसाइड नहीं करेगी, पर चैनल पे जो लोग आए हैं उनकी बातें सुन के जनता डिसाइड करने वाली आहे किसी वोट करना आहे किसी नहीं करना आहे। तो छाया मॅम तुमचं काय म्हणणं आहे याच्यावरती की कसं वोटिंग झालं पाहिजे? बेसिकली मॅम मला असं म्हणावं असं वाटतं की क्रियेविना वाचाळता व्यर्थ आहे. जर तुमची क्रिया नसेल आणि तुम्ही फक्त बोलत असाल तर ते खरंच व्यर्थ आहे. आणि ज्या पद्धतीने बुर्ला मॅम म्हणाल्या की सगळ्याच्या तळाशी शिक्षण आणि शिक्षणाला घेऊनच आपल्याला पुढे जायचं आहे, तर माझं ही प्रामाणिक आणि प्रांजल मत आहे की सगळ्यांनी मिळून शिक्षणावर आधी विचार करू, त्याने समाज जो आहे तो सुसंस्कृत होणार आहे आणि पुढे जाणार आहे. शिक्षणानंतरच सगळ्या गोष्टी येतात. अगदी खरं बोलताय तुम्ही, शिक्षणानंतरच सगळं पुढे जाईल. तरी सुद्धा मुद्दा इथेच अडून राहतो की लोकांनी वोट करायचं कोणाला? युथ पार्लमेंट म्हणजे युथ असा हा पार्लमेंटचा भाग असला पाहिजे का फक्त शिक्षणाला धरून आपण पुढे चाललं पाहिजे का कॉमन मॅनचे इश्यूज घेतले पाहिजे का फक्त पॉवर्टीवरती काम केलं पाहिजे? सो व्हॉट डू यू थिंक अस्मिता मॅम? युअर मेन मोटो इज टू एनलाइटन दी सोसायटी. व्हॉट काइंड ऑफ एनलाइटमेंट आर यू थिंकिंग ऑफ? The enlightenment that I'm thinking of is that common man should not be jobless. That is my one point. And as we know that many of them, due to this, in these 2 years, they are homeless also, and where they cannot get anything. So it's just one motto that even education is required at this field. So because of education, at least they can get jobs somewhere. So people have the right to vote for anyone who they think is the right person for them. So at the end of the discussion, it's just fine to say that education is most important part, and without that we cannot move forward. So people who are going to vote for them, just be focused that the right candidate should be done, and you are going to vote to the person who is actually suitable for the position and is going to take our country forward. So thank you everyone for being here, the part of panel discussion. Thank you the members who were the part of panel discussion. And here I say that topic is over for the discussion but not for the voting. Be ready, be alert and give the vote to the right candidate. May the right candidate win. Thank you. Tanishka Kharade, I'm the reporter, and with me I have the cameraman, Mr. Abhishek, and we are reporting live from VTC. And right now we're seeing that there's a lot of crowd over here that has gathered for the re-election. Now I would like to ask them some questions of how they're feeling, and this was very unexpected. So let's see what the crowd is feeling and where their heads are. Right now I'm with one of the person I've met, and her name is Nadia, and I will be asking her some questions. So how are you feeling, ma'am, today? Ma'am, it's good, but then standing in this line, I mean, we wanted to be getting the earlier the soon it's better. So ma'am, if we go inside. Okay, and how do you feel about this situation that has arisen? It's something that is very unexpected. Yes, ma'am, it is unexpected, but then we have to move ahead. We have to move ahead with all the things, whatever has occurred, still hoping for the best. Welcome back to MIS channel. This is your reporter Shreya Ingre, and with me is the Bhagyashri Angre, who is our cameraman. So we all can see here that people have gathered here. There's a lot of excitement and happiness there's a lot of enthusiasm we can see. Right, people are enthusiastic to cast their vote and elect a new candidate. Okay, so we can see here that our officer is all ready, so people are going to come in and they are going to verify their names over here, and later on they are allowed to go inside where you will see the actual setup is been done for the people to cast their vote. So we can see all the places are at right direction, they're going on the right direction, and all the people enthusiasm can be seen in the people. And
and we can also see that there are safety measures due to this pandemic. The elections, they should run on a proper place. So all the safety measures have been taken, and I think the the people who are there around are all set to go. And we are back again on the VTC channel. I am Tanushka Kharade and I have the cameraman Dipshika with me. And right now we are outside the booth where they are going to vote. So let's just take a tour of the same and get a peek of what is going on. So this is the first counter on which they are going to check the IDs, and they are going to be seeing if and verifying if they are the same people with their voter ID cards. And here we are going to come and we are going to get the stamp for the same on their fingers, and then we come to the main and they are going to choose who they are going to vote for. So let's begin. Identity proof. Yes, voter ID. I don't know. You don't have, so you cannot give the vote. So we need. हाँ. So आपको चाहिए. Yes. So right now you cannot give the vote. So if you can bring, then only I will allow you. नो आप नहीं कर सकते हो यहाँ पे अभी, क्योंकि आपके पास कुछ प्रूफ नहीं है. आपके पास वोटर आईडी नहीं है, आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ कुछ नहीं है. वो कंपलसरी होता है वोटिंग के लिए. So you have to go back and please bring that. Okay? Documents वो चाहिए. Without that we cannot give you. Okay? You cannot cast. Okay. Yeah? Okay, you have not reached 18. So if you have to cast a vote, you need to be 18 years of age. आप सभी का MIS चैनल पे हार्दिक स्वागत है. कैमरामैन भाग्यश्री के साथ मैं रिपोर्टर श्रेया इंगले आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ. आप सभी देख सकते हो कि आज जो री इलेक्शन का बहुत ज्यादा बड़ा दिन था वो खत्म होने के कगार पर है और सभी नागरिक अपना वोट कास्ट करके बाहर आ रहे हैं. अभी हम कुछ नागरिकों से उनके वोटिंग के बारे में पूछने की ताव पे है. तो अभी हमारे पास यहाँ पे एक नागरिक आए हैं, तो हम उनको अभी उनके बारे में पूछेंगे. तो मैम, आपको क्या लग रहा है कि आपने सही इंसान को वोट किया है, सही कैंडिडेट को वोट किया है आपने? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वोटिंग करके, बट आशा करती हूँ कि जिसको मैंने वोट किया वो चुन के आए. ओके, तो ये नागरिकों की जो उत्सुकता है ये अभी उन्होंने वोट करके जाहिर की है. अभी हम और एक नागरिक के पास जाके उनको पूछने वाले हैं. ओके, तो अभी हम मैडम से पूछने वाले हैं कि क्या इन्होंने जो कैंडिडेट को वोट किया है, क्या ये कैंडिडेट उनकी मांगों पर खरा उतरेगा? जी मैम, हमें उम्मीद तो पूरी है. जैसे हमने वोट किया है तो हमें उम्मीद तो पूरी है, लेकिन अब सब भगवान भरोसे, पता नहीं जो होगा. उम्मीद से तो हमने किया है, तो लगता है कि हमारे मांगे इस बार पूरी होंगी. तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. ओके, तो जो जनता में है, जो उत्सुकता है वो अभी भी जारी है. वो अपने कैंडिडेट के बारे में जो मांगे पूरी करने की चाह रखते हैं
वो होपफुली पूरी हो जाए। तो मैं श्रेया इंगले कैमरामैन भाग्यश्री के साथ और ताज़ा खबरें लेके आपके पास पहुंची रहूंगी। तब तक देखते रहिए MIS TV। थैंक यू, धन्यवाद। Good morning viewers, reporting live from MIS studio. Our eyes are big on exit poll, where we are going to go in a moment, booth after booth, so lot to look forward to who's ahead and who's trailing. But the focus has to be on Mrs. Tejaswini Burla from Lok Hitwari Party, because everyone has big hopes from her. And remember, polling is about to end. And the big news coming in, according to the waves we have in the exit poll, Mrs. Chaya Taure could be the one. But at the end of the day, the result can turn back and the ball can be in anybody's court. So a lot to look forward. Stay tuned. Thank you. Now I am going to announce round 1. Mrs. Chaya Taure. She has got 299 votes. Mrs. Tejaswini Burla. She has got 234 votes. Mrs. Asmita Amole. She has got 103 votes. Mr. Atish Kulkarni. He has got 156 votes. Nota 8. Round 2. Mrs. Chaya Taure. She has got 612 votes. Mrs. Tejaswini Burla. She has got 579 votes. Mrs. Asmita Amolik. She has got 311 votes. Mr. Atish Kulkarni. He has got 408 votes. Nota 20. Now I will announce round 3. Mrs. Chaya Taure. She has got 1013 votes. Mrs. Tejaswini Burla. She has got 1122 votes. Mrs. Asmita Amolik. She has got 427 votes. Mr. Atish Kulkarni. He has got 674 votes. Nota 36. Now the final results are out and the winning candidate is Mrs. Tejaswini Burla. So congratulations Mrs. Tejaswini Burla. Now I would like to request Mrs. Gayatri to felicitate Mrs. Tejaswini Burla. Good evening viewers, welcome back.
I'm Aisha Sayed reporting live from MIS studio. And a big news coming in from the district office as time has come to declare the rightful candidate. And it is nothing as predicted during the exit poll. Mrs. Tejaswini Burla leading, which is a very significant win given to the fact that they were given such a short amount of time to prepare for campaigning. This is Mrs. Tejaswini Burla from Lok Hitwadi Party, as she has won with whooping 1,122 votes. Mrs. Chaya Taure came close enough with 1,013 votes. So here we come to an end of this historical election. Congratulations are in order for Lok Hitwadi Party. Lok Hitwadi Party! आप सभी का MIS न्यूज में स्वागत है। आप सब देख सकते हो कि तेजस्विनी मिसेस तेजस्विनी की हमारी कैंडिडेट की चुनी है। सभी कार्यकर्ता यहाँ खुशी का बहुत छाया हुआ है। सभी कार्यकर्ता बहुत ही जल्दी मना रहे हैं। So as we can see that yes, Hitwadi party has won today, and we can see them celebrating their victory today. And we can say we have to ask them some questions. Very happy and very excited. Okay, and what do you think of doing for the nation? What do you think of doing for On the people? education, as I discussed, my focus would be on the education, and I would be working for the welfare of the women. Thank you, ma'am. Thank you so much. कैसा लग रहा है आपको? बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है मैम, मुझे बहुत बहुत खुश हूँ। आप सब देख सकते हो यहाँ पे सभी कार्यकर्ता